Assalamualaikum dear students. In today's lecture, we are going to learn about verbs. Verbs are words that show what the subject does, says, has और is. Verb ऐसे वर्ड को कहते हैं जो हमको बताते हैं सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कह रहा है या उसके पास क्या मौजूद है. Verbs have different forms. All forms of verbs come from base verbs. Verb की अलग अलग फॉर्म होती हैं जो कि base verb से आती है. A base verb is the simplest form of a verb without any special ending. बेस वर्ब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वर्ब का जिसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है, मतलब उसके आगे कोई भी स्पेशल वर्ड नहीं लगा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल रीड. अ बेस वर्ब चेंजेस फॉर्म टू शो टेंस. बेस वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करता है टेंस दिखाने के लिए. अलग अलग टेंस में वर्ब की फॉर्म अलग अलग होगी. All action verbs come from the base form of doing verbs. सारे action word verb की base form से आते हैं. For example, Grandpa is reading the newspaper. Here is reading is the action verb. Now see some exercise. In this exercise, you have to write the base verb of each underlined verb. इस एक्सरसाइज में आपको जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं उसकी बेस वर्ब लिखना है. फर्स्ट वन इज गिवन हियर. ग्रैंडपा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. इज रीडिंग इज अंडरलाइन हियर, सो वी हैव टू राइट इट्स बेस फॉर्म. इज रीडिंग की बेस फॉर्म क्या है? रीड. सेकेंड, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए कनिंग मर्चेंट. एक बार की बात है कि एक बहुत ही चालाक व्यापारी रहा करता था. कनिंग मीन्स चालाक. Here we have to write the base verb of lived. What is the base verb of live? Live. We will remove D from it. A musician strums a tune on the piano. Musician ने पियानो पर एक धुन बजाई. Here we have to write the base verb of strums. What is the base verb of strum? Strum. We will remove S from it. Next, the here will go to the lion's den. Here will go is underlined, so we have to write its base verb. Will go का base verb क्या होगा? Go. The chameleon changes its color. We have to write the base verb of changes. What is the base verb of changes? Change. हमने इसमें से S निकाल लिया तो वो बन गया change. A base verb changes form to show tense. Base verb अपनी form change करता है tense दिखाने के लिए. For example, play. It is the present form. We will add S or ES in this base verb according to the subject in present form. And in past, it will become played. And in future, we will use will play. Some verbs called the saying verbs show how living things express themselves. कुछ वर्ब को सेइंग वर्ब भी कहा जाता है जो हमको बताते हैं कि लिविंग थिंग जानदार खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वेयर स्क्रीमिंग. बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. हियर स्क्रीमिंग इज द सेइंग वर्ब. नाउ सी द एक्सरसाइज. In this exercise, you have to underline the saying verbs and you have to write their base verbs. आपको इसमें saying verb को underline करना है और उसका base verb लिखना है. First one, the children were screaming. इसमें saying verb क्या होगा?
screaming. And what is the base verb of it? Scream. Second, the beggar sighed. भिखारी ने लंबी सांस लिया. What is the saying verb here? Sighed. And base verb is sigh. Next, the students said a lovely prayer. Here, said is the saying verb and say is the base verb. We chuckled. हम मुंह दबाकर हंसने लगे. Here, chuckle is the saying verb and chuckle is the base verb. We remove D from it. The dog snarled at the stranger. कुत्ता अजनबी पर भौंक झपटने लगा. Here, snarled is the saying verb and snarl is the base verb. We remove ed from it. I was explaining the lesson. मैंने lesson explain किया था. Here explaining is the saying verb and explain is the base verb. Some verbs show what the subject is or have. They are called the being verbs and the having verbs respectively. कुछ वर्ब हमको बताते हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या मौजूद है. इस वर्ब को हम बीइंग वर्ब कहते हैं और हैज वर्ब को हम हैविंग वर्ब्स कहते हैं. The being and having verbs are called linking verbs. They show the condition of the noun in the subject. जो being और having verb होते हैं उसे हम linking verb कहते हैं. ये हमको सब्जेक्ट नाउन की कंडीशन बताते हैं सब्जेक्ट के अंदर. दे लिंक द सब्जेक्ट टू द नाउन और द एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट. ये सब्जेक्ट को नाउन से या एडजेक्टिव से जोड़ते हैं प्रेडिकेट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ए बिग कंट्री. हियर इंडिया इज द सब्जेक्ट एंड लिंकिंग वर्ब इज एंड is joining the subject to the adjective. इस ये इंडिया सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से लिंक कर रहा है. हाउ इज इंडिया? इंडिया इज अ बिग कंट्री. इट शोज द कंडीशन ऑफ नाउन इन कंट्री in the subject. Now see the exercise. In this exercise you have to circle the being verbs and the having verb in the given sentences. आपको इसमें being verb या having verb को circle करना है. See the first one. An adult has 206 bones. इसमें being या having verb कौन सा है? Has. So we will circle it. Second, the door was shut, so we were out. Here two verbs are there, was and were. Third one, the keys are lost. Here are is the being verb. Wrestlers have strong muscles. Here have is the having verb. So we will circle it. The flamingos will be here. Here what is the being verb? Will be. India is a big country. Here we will circle is. I am a proud Indian. Here am is a being verb. My sister had fever. Here had is a having verb. Next, write the base verb of the given verbs. आपको जो वर्ब दिए हुए हैं उसका बेस वर्ब लिखना है. Moon. उसका बेस वर्ब क्या होगा? Moon. We will remove ed from it. Believes. Believes का बेस वर्ब क्या होगा? Believe. हमने उसमें से s निकाल दिया.
was suffering. was suffering का क्या होगा बेस वर्ब? suffer. knew. knew का बेस वर्ब क्या होगा? know. typed. typed का बेस वर्ब? type. We will remove d from it. expressed. Here also we will remove d and it will become express. Now note down today's homework. In today's homework you have to solve the exercise on workbook page number 41. In this you have to make sentences that say something about the picture. Use the given verbs in any form.